कोविड-19 के आने के बाद हम सभी ने मास्क और सैनिटाइजर को अपने जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बना लिया है। अगर आप में से किसी का भी कोविड टेस्ट हुआ होगा तो आपने इस चीज को जरूर देखा होगा। इसे कहते हैं कॉटन स्वैब और आपने पीपीई किट्स के बारे में भी सुना होगा। बट क्या आप लोग ये जानते हैं इन पीपीई किट्स, इन कॉटन स्वैब्स का आपके कोविड के रिजल्ट के आने के बाद क्या होता है? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। हाय, my name is Akash Nagi. I'm an actor, writer, engineer, a content creator, a fitness enthusiast, and I welcome you all to this channel. जब कोविड-19 को WHO ने एक पैंडेमिक घोषित कर दिया था तो 2020 में लॉकडाउन लगा था। तो 2020 में हमने बहुत सी ऐसी अनोखी चीजें देखी थी जो कि उससे पहले नहीं देखी जाती, जैसे कि बहुत से एनिमल्स सड़कों पर उतर आए थे, या फिर बहुत से एनिमल्स को हमने ओशंस में देखा था जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में उससे पहले हम नहीं देख पा रहे। बट ये सब एक बहुत ही दूर की पिक्चर है। इसके साथ साथ हमने बहुत ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस किया है। यूज्ड कॉटन स्वैब्स को, यूज्ड पीपीई किट्स को या फिर यूज्ड मास्क्स को बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर काउंट किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और immunization of animals or humans during research activities or health camps or in the production or testing of biological. Biomedical waste contain human tissues, items contaminated with blood, body fluids like dressing, plaster casts, cotton swabs, bedding contaminated with blood or fluids, blood bags, needles, syringes or any contaminated sharp objects. Biomedical waste is generated from hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, animal houses, pathological laboratories, blood banks और healthcare facilities. हम बायोमेडिकल वेस्ट को इतनी बड़ी तादाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे प्लैनेट पर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। In May of 2021, India has produced 203 tons of biomedical waste per day. On 10th of May 2021, we have produced 250 tons of biomedical waste. Kerala has produced 23.71 tons of biomedical waste per day. Gujarat has produced 21.98 tons of biomedical waste. Maharashtra has produced 19.02 tons of biomedical waste each day. Delhi has produced 18.79 tons of biomedical waste. Haryana has produced 13.11 tons of biomedical waste. Uttar Pradesh has produced 15.11 tons of biomedical waste. West Bengal has produced 5.72 tons of biomedical waste each day. This all happened because of the second wave in India. This data was recorded in the month of May 2021. प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जिस भी प्रेमिस से जनरेट होता है उसे वहीं पर सॉर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है ताकि उसे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक लेकर जाने में कोई दिक्कत ना हो। सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज 85% of biomedical waste is non-hazardous, while only 15% of biomedical waste is hazardous. And if they are mixed, then the whole waste becomes hazardous. And improper disposal increases the risk of infections. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इस एक्ट को 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा पास किया गया, जिसके तहत बायोमेडिकल रूल्स, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग को 1998 में पास किया गया। इन रूल्स के हिसाब से ऑक्यूपायर वो पर्सन है जिसके पास पूरा कंट्रोल है उस इंस्टीट्यूशन का या फिर उस प्रेमिस का जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा, जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग हो। उस पर्सन को ये चीज इंश्योर करनी है कि जब बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग होगी या फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, इस प्रोसेस में किसी भी ह्यूमन या फिर एनवायरनमेंट को कोई प्रभाव ना हो। इन रूल्स को 2016 में अमेंड किया गया सो एज टू इंप्रूव द कंप्लायंस एंड स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। 2016 में कुछ ऐसे चेंजेस लाए गए जैसे कि नो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और gloves to be used after 27th of March 2019. Healthcare facilities shall have to make available the annual reports on their website within a period of 2 days from the date of publication of biomedical waste rules. Barcoding and global positioning system of biomedical waste handling has to be established. 1986 के एक्ट में बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में बांटा गया था, बट 2016 में इन्हें घटाकर 4 कैटेगरीज में कर दिया गया है फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। Biomedical Waste Management and Handling Rules 1986. Waste Categories and Types. Category 1. Human Anatomical Waste. This includes human tissues, organs, body parts and fetus below the viability period. Treatment. Incineration and deep burial. Category 2. Animal Anatomical Waste. This includes experimental animal carcasses, body parts,
organs, tissues, including the waste generated from animals used in experiments or testing in veterinary hospitals or colleges or animal houses. Category 3. Microbiology and biotechnology waste. This includes waste from laboratory cultures, stocks or specimens of microorganism, live or attenuated vaccines, human and animal cell cultures used in research and industrial laboratories, waste from production of biologicals, toxins, dishes and devices used for transfer of cultures. Treatment, autoclaving, microwaving, incineration. Category 4. Waste sharps. This includes needles, syringes, scalpels, blades, glass that may cause puncture and cuts. This includes both used and unused sharps. Treatment, disinfection and chemical treatment or autoclaving or microwaving and mutilation or shredding. Category 5. Discarded medicines and cytotoxic drugs. Waste comprising of outdated, contaminated and discarded medicines. Treatment, incineration or destruction and drugs disposal in secured landfills. Category 6. Solid waste. Items contaminated with blood or body fluids including cotton, dressing, linens, beddings and other materials contaminated with blood. Treatment, incineration and autoclaving or microwaving. Category 7. Solid waste. Waste generated from disposable items other than sharps. Treatment, disinfection by chemical treatment and autoclaving or microwaving and mutilation or shredding. Category 8. Liquid waste. Waste generated from laboratory and washing, cleaning or housekeeping and disinfecting activities. Treatment, disinfection by chemical treatment and discharge. Category 9. Incineration ash. Ash generated from incineration of any biomedical waste. Treatment, disposal in municipal landfills. Category 10. Chemical waste. Chemicals used in production of biologicals. Chemical used in disinfection. Treatment, chemical treatment and discharge into drain for liquids and secured landfill for solids. Yellow category. Human anatomical waste, animal anatomical waste, solid waste, expired or discarded medicines, chemical waste, discarded linens, mattresses, beddings contaminated with blood or body fluids, routine masks. They are to be stored in a yellow colored non-chlorinated plastic bags or containers. Treatment, incineration or plasma pyrolysis or deep burials. Chemical liquid waste. They are to be stored separately. Treatment, after resource recovery, the chemical liquid waste shall be pre-treated before mixing with other water waste. Microbiology, biotechnology and other clinical laboratory waste. They are to be stored in autoclave safe plastic bags or containers. Treatment, they are pre-treated to sterilize with non-chlorinated chemicals on site as per NACO or WHO guidelines. Red category, contaminated waste. They are to be stored in a red colored non-chlorinated plastic bag or container. Treatment, autoclaving or microwaving, hydroclaving, followed by shredding or mutilation or combination of sterilization and shredding. White category, waste sharps including metals. They are to be stored in a puncture-proof, leak-proof, tamper-proof containers. Treatment, autoclaving or dry heat sterilization, followed by shredding or mutilation or encapsulation in a metal container or cement concrete. Blue category. This includes glassware and metallic body implants. They are to be stored in a puncture-proof or leak-proof boxes or containers with blue-colored marking. Treatment, disinfection or through autoclaving or microwaving or hydroclaving and then sent for recycling. For COVID-related biomedical waste production, personal protection equipments, PPE kits, shoe covers, cotton swab, gloves, head covers, disposable bed sheets comes under yellow category. Means they are to be stored in a yellow container. Eye protection goggles, pen, plastic bottles and bed sheets comes under red category. Means they are to be stored in a container labeled red. Sharp waste are to be stored in white bins. Glasswares, tube lights, CFL bulbs, LED bulbs are to be stored in a cardboard labeled blue. Like this video, share this video and subscribe to the channel.